centuries of discrimination against women have now led to a national crisis for India. ये बेहद अफसोस की बात है कि लड़कियों के अनुपात में पिछली जनगणना की तुलना में गिरावट आई है। इस हालत को सुधारने के लिए हमें न सिर्फ मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा, बल्कि हमारे समाज में लड़कियों और महिलाओं को जिस नज़रिए से देखा जाता है उसको भी बदलना होगा। A declining child sex ratio came across as the horrific manifestation of the serious issues faced by the women of India in all areas, ranging from education to work to the domestic sphere. To create solutions for these deep-rooted problems, the Government of India created the National Mission for Empowerment of Women. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की एक जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है देश भर में जितनी हमारी मंत्रालय हैं, विभाग हैं और राज्य सरकारें हैं, उन सबको किस तरह से एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जिससे हमारे प्रयास अलग अलग बहुत हैं। हर मंत्रालय महिला को सशक्त करने के लिए अपने प्रयास करता है, लेकिन ये राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कन्वर्ज कर सकते हैं सभी मंत्रालयों। The mission is launching 11 thematic convergence projects, combining the efforts of different ministries, state governments, civil society organizations, and other bodies responsible for good governance, all to address different women's issues with a well-defined strategy and focus. Some of these projects are action researches that will throw light on innovative solutions to age-old problems. These thematic convergence projects will address cross-cutting issues impacting the status of women in India, like declining child sex ratio, behavior change communication to address sex selection, economic empowerment of women through ecotourism, and value chain development, social inclusion for sex workers, data exhibition to ease information access on basic infrastructure, strengthening local participation in district planning, gender mainstreaming in municipal budgeting, redressal for survivors of domestic violence, and bettering the lives of the socially excluded. The Ministry of Panchayati Raj has taken a number of steps to reverse the trend of declining child sex ratio. The major issue is of mindsets, which need to be changed. This requires that panchayats understand why and how female feticide takes place. The panchayats have taken a number of steps, including keeping a close eye on touts who come to the village for facilitating sex determination tests. हर आंगन की तुलसी नारी, नारी है फूलों की क्यारी, नारी सा नहीं कोई जग में, नारी है दुनिया से न्यारी. A major initiative was a recent declaration by the panchayats of Haryana, banning dowry and equating female feticide with a heinous crime. The mission is now partnering with the ministry to enhance its attack on declining child sex ratio. We have hit upon this idea that why not use the community itself through the agency of the Panchayati Raj institutions and under the guidance of the district authorities to see if it can really make some kind of a substantial difference. With this in view, we have thought about ushering in a few model pilot convergence projects in some 12 districts spread across 7 states of India, which has some of the lowest child sex ratio, as well as where the capabilities of the Panchayati Raj institutions have been felt to be somewhat robust to ensure a better delivery of the project execution. Another one of the mission's projects in Haryana gives an insight
into the chain of government and non-government institutions that are working together to bring about changes in mindsets. The project hopes to develop the right kind of messages so that people are encouraged to refrain from sex selection. गांव में अब सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि कोई भी अपनी लड़की को या अपनी बहू को ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलने देते। सास कह रही है कि ऐसा करवाना चाहिए, हमें लड़का ही चाहिए, या आदमी कह रहा है, तो उसको महिलाएं ही कंट्रोल में कर सकती हैं। हर आदमी अपने तरीके से विचार विमर्श करे कि हमें ये काम करना नहीं, भाई 2 लड़की हो गई या कुछ जरूरी थोड़ा भी लड़का भी जरूरी है। What the team at the mission is striving to do is to bring together the various cross-cutting linkages, at the various kinds of verticals and the horizontal levels, which is like starting from the grassroots level institutions, the grassroots level civil society organizations, and the community voices, linking them right up to the top, because there's a National Mission Authority headed by the Prime Minister, mandated under the national mission to look at the various issues which impact women. And, this is possible, because of the mandate given to the mission that it looks at not just policy levels, but also programmatic issues. The road ahead is not going to be easy. But the Government of India is committed to empowering the women of the country and ensuring a just, free and equal society for them, and will continue working towards this goal. भारत में गिरती हुई बच्चियों की संख्या का जो विषय है बहुत ही गंभीर है। इसे रोकने के लिए मैं समस्त भारतवासियों से अपील करती हूँ कि हम सब मिलके इसका समाधान ढूंढें, हम सब मिलके इसका काम करें, चाहे भारत में किसी भाषा के बोलने वाले हों, किसी काम को करने वाले हों, किसी प्रांत में रहने वाले हों। जब तक हम सब मिलके एकजुट होकर समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो इसमें सफलता मिलना मुश्किल है। इसीलिए मेरी ये अपील है, बार बार ये अपील है कि हम सब मिलके इस समस्या के निदान के लिए काम करें और गिरती हुई बच्चियों की संख्या को रोकें, और साथ साथ हम सब मिलके जो हमारा लिंग अनुपात बच्चियों का गिर रहा है उसको रोकने में सबका सहयोग ही देश के बढ़ते हुए कदमों में आगे बढ़ पाए।